Hello, my name is Anuban Kate. I am a Paris-based engineer and also the co-founder of the collective that's called Les Forums Français. Today, I'm really pleased, I'm very happy that I have four guests with me, and they are here because I happened to attend last week a beautiful exhibition of a book that's titled Chola Maati, and it's about the tribal Gond Pradhan tribals from Madhya Pradesh, a small village called Patangarh, I guess. Um, and so these four people that I'm going to introduce you to are behind this project, a beautiful project. They have published a book which puts together all the beautiful paintings from the artists from this region. There are also some nice pictures and a narration of the community life there. So my first of all, I would introduce Christian. Christian Journet is with me, who leads the organization called DUPATTA. Then I have with me Padmaja SRIVASTAVA. I have Mayank Singh Sham, and finally I have Komal BEDI SOHAL with me. So I first invite and introduce Christian to present to us the story behind this project and the Dupatta organization. And now I will switch to French because Christian he prefers to speak in French. Alors je vais parler en français avec Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir. Donc moi je t'inviterai à nous expliquer ton implication, ton projet de Dupatta et aussi la publication de ce livre Chola Maati euh, et tous les autres peintures, œuvres que tu présentes à Paris en ce moment. C'est une exhibition. Donc, est-ce que tu pourras nous vraiment présenter l'origine de ce projet et ton implication? Alors, je vais parler de deux origines. La première origine, c'est l'origine de notre association DUPATTA. Pourquoi elle existe, quels sont ses objectifs, et puis ensuite, effectivement, l'origine du projet Chola Maati auquel j'ai participé. Alors, en ce qui concerne DUPATTA, il faut savoir que c'est une association à but non lucratif, créée en 2008, avec pour objectif principal de collecter les histoires et les peintures dans les tribus et les minorités de l'Inde, de façon à les faire connaître du public français. Donc pour ce faire, je voyage beaucoup à travers l'Inde pour aller chercher au nord, comme au sud, comme à l'est ou à l'ouest, et au centre, on va le voir dans le détail par la suite, des peintures donc et des histoires. Et puis ensuite en France, j'organise des expositions avec une équipe de 30 personnes réunies donc sous le nom de l'association Dupata. Et on va comme ça 4 ou 5 fois par an dans des villes différentes, dans des galeries, pour présenter ce travail collecté auprès des tribus et des minorités. Voilà donc l'objectif de Dupata. Et pour arriver à faire ça, il faut que je m'appuie sur des personnes qui se trouvent en Inde et qui connaissent bien l'Inde et qui connaissent bien les tribus et l'art indien et les arts populaires, etc. Et pour moi, la personne principale, c'est Padmaja SRIVASTAVA. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Chaque fois que je suis en Inde, c'est-à-dire au moins 2 fois par an, on essaye de se rencontrer, de partir ensemble, parcourir le Bengale ou le Maharashtra ou d'autres régions encore. Elle me présente des peintres parce que c'est manifestement la personne qui aujourd'hui a la plus grande connaissance des arts populaires en Inde. Et donc, on a l'habitude de travailler ensemble. Et un jour, elle me dit, il y a peut-être 3 ans, j'ai un projet qui consiste à créer un livre avec une exposition, avec Mayank, etc. J'ai écouté ça de façon un peu distraite au départ. Et puis après, je me suis pris au jeu et en particulier, je me suis rendu avec elle chez Mayank, dans son village natal, le village natal de son père, avec aussi Komal qui participe au projet en tant que photographe. Et là, j'ai vraiment été convaincu à la fois du bien fondé et de la qualité du projet. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, pour l'instant là-dessus, et si tu as des questions précises, je t'écoute.
D'accord. Non, j'ai vraiment envie de te dire un grand bravo pour toute ta passion, ton implication, parce que mener ce genre de projet à distance et avec les déplacements, avec autant de personnes, ça demande beaucoup d'efforts. Tu as beaucoup de ressources et cette capacité de faire rencontrer les deux cultures et des peuples. Donc, merci beaucoup pour ce travail. Mais le livre est publié en français, donc c'est disponible pour acheter. Euh, donc merci beaucoup. Et maintenant, je vais inviter Padmaja Srivastava. So now I'm going to invite Padmaja Srivastava. Before I invite her to talk, I have few words to say about her. That she's from Pune. She has studied architecture, and in 1995 she moved to Bhopal to along with her husband to do work in architecture. But she also developed ecotourism in the tiger reserves in Madhya Pradesh. And it was there that she encountered the folk artists and artisans, and in particular the Pradhan Gonds of central India. And she has been, as Christiane said, she has been involved in a DUPATTA collective organization, and she's a very active member. She comes to France frequently to present the art forms and artists, the work of artists from India. So Padmaja, I was really happy the other day when we met and I listened to you. You have played a very important part in this book of narrating it. You have been visiting this village in Madhya Pradesh since last more than 20 years. And what I remember in your talk the other day, there was this deep concern and perhaps a bit of regret that all these traditional art, culture, skills are vanishing with time. But your effort, this book, is a proof that you are doing all that you can do to so that people across the world in France and other places can appreciate this work. So could you please tell us briefly what was the inspiration behind this book and this whole project? Yes, so you mentioned, and which I would like to also say that I have been working with the Pardhan Gonds particularly for almost 20 years now. And very often when I would sit with Mayank, I have known him also for a very long time, and we would discuss, the dying traditions and rituals of the Pardhan Gonds. And I mean, I had noticed that the younger generations were now leading a more global life. You know, they were not practicing their culture as much as their earlier ancestor, the forefathers, would have done. So, in whilst talking to Mayank, we kind of came to a consensus, and we decided that we needed to do something about this. And the only way we thought we could do is by documenting these traditions and rituals, by visiting their villages, and interviewing people, taking photographs, witnessing their rituals. So. Yes, so that is how this book took form. Okay, thank you. And now I will move to Mayank Singh Sham, who is the son of the famous artist Jangar Singh Sham, and he has a link with France because I think it was with Christian or perhaps with some other people that he had come to France a few times at least and had presented his work here. That was Mayank's father. But now we will talk about Mayank. And for that, I will choose Hindi, the language, because Mayank is more comfortable with it. But before that, I will introduce him. So Mayank, his art, he's the painter, he's the artist, and his art is deeply rooted in the expression of his thoughts, his innermost feelings and imagination. He told me the other day that
he also experiments with natural colors and he uses those colors for his paintings. He will tell more about it to us. And in his painting, there's a lot of symbolism, and nature, of course, is the central idea. For example, we will see a lot of fish in his paintings, and that represents water, rivers, rain, ocean. Then there are trees. Trees represent Mother Earth's strength, interconnectedness of living beings. And finally, the birds, which represent sky, freedom, and heaven. So this was for his introduction. तो मयंक जी आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ आप यहाँ पे हैं और हम बातचीत कर सकेंगे आज। जी उस दिन नमस्कार जब मैं अनुबंध आप जी। नमस्कार। तो उस दिन जब हम मिले थे, जी आपने मुझे आपके दो दो तीन चित्र समझाए थे, बताए थे उसके पीछे का जो भी विचार था, कैसे वो आपने उसको चित्रित किया। वो मैं आज चाहता हूँ कि आप वो हम सबके साथ साझा करें वो आपके विचार। लेकिन उसके पहले क्या आप बताएंगे हमें कि अ, ये कैसी प्रक्रिया रही, कैसा सफ़र रहा आपका आज तक। एक तो आपने कहा आपके पिताजी का आपके ऊपर काफ़ी प्रभाव था उनके काम का। अ, और फिर ये जो आप गांव में नहीं रहते लेकिन गांव से बहुत जुड़े हैं आपके, आपने ये बताया था मुझे। तो जी इस सब को आप कैसे देखते हैं? अ, देखिए ये हालांकि सफर तो 2021 से शुरू हो गया था और चूंकि हमेशा एक कलाकार अपनी कल्पनाओं से ही एक चित्र को चित्रित करता है। तो पद्मजा जी के साथ मेरी काफी पुरानी जान पहचान है। हम लोग काफी लंबे समय से एक साथ हम लोगों ने काम भी किया है और एक एज एन एक परिवार की तरह हम लोग मिलते जुलते रहे हैं। तो मैंने एक बार कहा कि और पद्मा जी ने भी कहा कि हमको कुछ ना कुछ काम करना है। तो मेरे दिमाग में एक लकड़ी के ऊपर जो पूरा जीवन होता है, कैसे एक लकड़ी के ऊपर पूरा जीवन निर्भर है एक इंसान का, उसके ऊपर मैंने एक स्टोरी बताई थी। तो पद्मा जी ने भी कहा कि क्यों ना मयंक हम इस स्टोरी को अपने पारंपरिक जो कथाएं हैं और पूरी जो दुनिया है, जो पूरी शैली है और जो एक पूरा जीवन जो कटता है हमारे आपके गांव में, आपकी परंपरा में, उसमें हम इस पर काम करते हैं। तो मुझे भी, क्योंकि मेरे पिता ने सिर्फ एक ही चीज पर काम नहीं किया, जैसे कि रंग एक्रिलिक कलर या फिर वाटर कलर में ही काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई हैं, ग्राफिक में भी काम किया है। तो उनकी मिट्टी की मूर्तियों को देखकर भी मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा भाव था कि मैं कुछ मिट्टी से जुड़े हुए कुछ काम करूं अपने पिता की तरह। फिर मुझे पद्मा जी ने एक बार कहा कि क्यों ना तुम अपने ट्रेडिशनल रंगों का इस्तेमाल करो और एक नया काम शुरू करो। तो फिर इसके साथ हम लोगों के साथ एक स्टोरी जुड़ी और फाइनली मैंने सबसे पहले जो हमारे गांव की प्रसिद्ध कहानी है, जो हम सबसे ज्यादा मानते हैं और आज भी मानते हैं और हम उसकी पूजा पाठ करते हैं, जो कि है बड़ा देव। ये बड़े देव की उत्पत्ति और इस धरती की उत्पत्ति के ऊपर, तो ये धरती की उत्पत्ति की जो कहानी है वो मुझे बहुत शुरू से प्रेरित करती रही है। और चूंकि मेरे पिता के चित्रों को ही देखकर मुझे प्रेरणा मिली है कि, और ये टेक्निक मिला है कि मैं किस तरीके से और काम कर सकता हूँ। और सच्ची बात और ये भी है कि पिताजी का हमेशा ही कहना था कि जो भी करो, जो अंदर से दिल से आता है वही सच्ची कला है। तो उसी को मानते हुए पद्मजा लोगों के साथ मिलते हुए हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। और शुरू में 2021 में मैंने सबसे पहला काम रामरज मिट्टी के नाम से जो जानी जाती है, जो ट्रेडिशनल क्ले है हमारे, अ, विशेष तौर पे दिवाली के अवसर पर और अन्य ऐसे फेस्टिवल्स में घर को साफ सुथरा लीपने का और ढिगना, ज्योमेट्रिक फॉर्म में लीपने का जो रिवाज है, देवी देवताओं का स्थान बनाने का जो रिवाज है, उन्हीं रंगों से सबसे पहले मैंने धरती की उत्पत्ति और बड़े देव के जन्म के ऊपर मैंने वो बनाया, पहली पेंटिंग बनाई जो नेचुरल कलर में थी। जी हाँ। बिल्कुल यही पेंटिंग है।
जी, तो ये इस जो कहानी में एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे शुरू से प्रभावित करती रही है कि इसमें एक तो धरती की उत्पत्ति है, उससे पहले पूरी दुनिया में पूरे अर्थ में, इस पृथ्वी लोक में पूर्वजों के किस्से कहानियों के अनुसार पूरा जल ही जल का भराव था। मतलब धरती या मिट्टी का कोई पता नहीं था। उसी समय कहते हैं कि पूरे खारे पानी के बीच में एक पुरई पान जो लोटस लीव है, उसमें एक मीठे पानी की जो बूंद थी, उस बूंद के द्वारा ही देव का, बड़े देव का जन्म हुआ। तो मैंने अपने अंतर आत्मा से कल्पना की कि अगर मुझे इतना बड़ा समुद्र सागर देखना है तो मैं इसे रंगों की तरह नहीं, मैं इसे मछली के रूप में देखना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने फिर वहां पर मछली बनाई, और लोटस लीफ में क्योंकि छोटा सा एक पानी की बूंद से उस देव का जन्म हुआ था, तो मैंने फिर कल्पना की कि जन्म कहाँ से होता है, जो मैं रियल लाइफ में महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, या हम देखते हैं कि जन्म हर जीव का कहाँ से होता है। तो उनका जन्म योनि से होता है, इसलिए मैंने उस पत्ते को योनि की तरह देखा और जन्म स्थान की तरह देखा। ऐसी मेरी इस चित्र में कल्पना है। अच्छा, बहुत खूबसूरत है ये चित्र। जी इसके बाद एक और चित्र आपने मेरे साथ साझा किया था, मैं उसको दिखाता हूँ, शायद ये वाला ना, जी मृत्यु जी कहाँ। जी बिल्कुल। तो जैसे कि ये बहुत ही सुंदर बात हुई कि अक्सर हमारे कम्युनिटी में लोगों ने कहीं ना कोई किस्से, कोई ना कोई रीति रिवाज, कोई ना कोई परंपरा को लेकर कुछ ना कुछ तो चित्रित किया है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने पद्मजा के साथ मिलकर पूरी सीरीज पर काम किया है। मतलब बर्थ से डेथ तक, शुरू से लेके अंत तक की कहानी पर। तो ये वही चित्र है जो मैंने सबसे अंत की कहानी के लिए बनाई है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक जो परंपरा है, जिसमें एक गुड्डी पुजाई करके एक पूजा होती है, जिसमें अंत में देव शक्ति आकर और उस पर पानी छिड़क कर, जैसे जितने भी मृत व्यक्ति होते हैं उनके नाम से एक हल्दी की गांठ बांधी जाती है और उसे छुपा दिया जाता है, और देव द्वारा, वो उनकी शक्ति के द्वारा उसे उजागर करते हुए और उस पर पानी छिड़क कर उसे तृप्त कर दिया जाता है, और इस लोक से मुक्त करके नए जन्म के लिए उसे तैयार कर दिया जाता है। क्योंकि शरीर खत्म हो जाता है और आत्माएं फिर दूसरे शरीर पर प्रवेश कर लेती हैं। तो मेरे मन के अंदर जो कल्पना जागी कि क्योंकि मैंने एक किस्सा और सुना था अपने मामा जी से, उन्होंने बताया था कि हम मनुष्य जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए अनेकों अनुष्ठान बनाए हैं मनुष्य जाति ने। पर जब जीव तो दुनिया में सभी जीव हैं, पक्षी भी है, कीड़ा भी है, मकोड़ा भी है, कई तरह के जानवर हैं, जब ये मर जाएंगे तो इनको कौन तृप्त करेगा। तो इनको कहा कि जो वो जो पक्षी है, गिद्ध पक्षी, इसको कहा गया है कि इसको जो है आदेश मिला है ईश्वर के घर से कि जब भी कोई मृत जानवर दिखे तो उसे तुरंत खाकर और तुरंत पानी पीने। तो ये अक्सर क्या करता है कि तुरंत उसे खाता है और दूर नदी में जाकर पानी पी लेता है। जैसे उसके मृत शरीर पर वो पानी पड़ता है तो वो भी इस जीवन से मुक्त होकर और नए जीवन के लिए चला जाता है। तो मैंने उसी पूजा की जो हमारे परंपरा में विशेष गुड्डी पुजाई के नाम से जानी जाती है, उसमें इस तरह का प्रोसेस है। तो मैंने उसकी तुलना इस गिद्ध पक्षी से की है कि ये भी तृप्त करने का ही काम करता है और नए जीवन के लिए फिर से रीबर्थ की तरफ हमें हाँ, देखता है। आपकी किताब पढ़ते वक्त भी मुझे ये बात ध्यान में आई कि अ, हम लोग सब प्रकृति से आए हैं और वही प्रकृति में ही फिर से वापस जाएंगे। तो आपका जी किताब का नाम भी छोला माटी है, तो मिट्टी से ही जी आए हैं और मिट्टी में ही जाएंगे। तो जी शुक्रिया, बहुत खूबसूरती से आपने हमें समझाया। और जी लोग इस किताब को पढ़ के देख के भी आपके चित्रों को और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। जी शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल मूव टू कोमल बेदी सोहल, who is a photographer. She has included her photographs in this book,
But not only that, I will briefly introduce her and then invite her comments. So she is an acclaimed director, designer, photographer. She loves doing storytelling, and I witnessed that the other day when she explained to all of us her implication in this project. And she also does visual artistry. She has worked extensively in advertising. She has won several awards internationally, and she does exhibitions all over the world. So, Komalji, I would like now to tell us about your impressions when you were in that village. You made several visits there, you stayed there, and you experienced the life of the people there, which kind of really shaped your vision about this project and this book. So, could you please tell us your thoughts? Firstly, Anuman, thank you so much for inviting us to their platform. Thank you for appreciating our book, for our exhibition. That was a really good feedback. Thank you. So I actually met Padmaja in 2022, and Padmaja had already conceived this project. She had already started work on it. But when she sort of spoke, when we spoke, I was so intrigued. And I was always intrigued because I'm a big fan of the arts and I always wanted to be involved. I moved back to India after about 25 years abroad. So I really wanted to get into a very meaty project. And when Padmaja spoke to me about it, I was very impressed. And we both made a trip to Pardhan, and it was more of a chemistry trip, but I was absolutely blown over by the village, by the people, by the culture, by the customs. And post that, both Padmaja, Mayank, and I, we started sort of collaborating on it. We agreed to work. It was very good chemistry. We had a fantastic job over the last 4 years putting this thing together. And for me, specifically, if you talk to me about the village, I think it was just, their rootedness to Mother Earth, their beliefs, how ancient and wise everything was. For me, it was such a deep connection to the earth that I wanted it to be a part of it. There are many stories that I have, which once we talk about the photographs, I can speak a little bit more about it. But yes, that's how the project began. We started in 22 and we've been working on it from then till now, which is 25. So it's taken us 4 years to put this exhibition together, to put the book together. I also designed the book. So that was another sort of, along with Padmaja, who wrote it, researched it. I designed it. Mayank did all the paintings. It was a huge project. And then, of course, Christian helped us all the way. And bringing it to Paris was all thanks to him. Yeah, no, when one looks at the book and of course the exhibition, we see the aesthetics, which is very important. And it's not just one aspect of the book, but it's all the aspects which have come together beautifully well. Yes. And And there were many aspects of it. Like, of course, there was storytelling, which is the heart of the book, because that's what we are trying to do. yeah, But what was very important in the book was how everything flows. So, there was storytelling, which is at the heart of what we were trying to do. So, to give uh, importance to storytelling, to the paintings, to the photographs, to the music that the village folk of Patangara sung, to the sketches that Mayank has made, everything needed to find a place and to be indeed. presented very aesthetically. Then, of course, the publishing and the more hardcore aspects of getting a book out. It's been an amazing experience. Indeed, before I invite you to explain to us these paintings, these photographs, I think there was an important aspect which I forgot and you just mentioned, and I would like to highlight it again, that in the book you also have included folk songs, songs of That's the correct. people there.
and which describe the different important stages or festivities or important events in their lives, and they are beautifully included, embedded in the book. So it's really a whole complete Yeah. package of celebration of life. Yeah, It's a multidisciplinary project. indeed, indeed. So this is one of the photographs that you would like Yes. to explain to us, Yes. right? Yeah, please go ahead. So as Mayank was talking about, the birth of Baladev. Now, this Yeah. is such an esoteric concept, and how do you then sort of encapsulate it in a photograph? And these are not photographs that are, a collage or put together in Photoshop or AI, right? This Yeah. is a one single photograph. So when he talks about fish being the amniotic fluid and the lotus leaf being the birthplace of Baladev, how do I then depict that in a photograph? So my sort of interpretation. So we had decided very early on, the three of us, that we are not going to um, sort of recreate a painting in a photograph or a photograph in a painting. They were all interpretations. It was either Mayank's interpretation or mine. So for me, this lotus sort of floating on a very dark, silty lake with the stem that then becomes the umbilical cord, and the lotus leaf that becomes the womb, and the flower, the birth. So I represent this as the birth of Baladev. So beyond being an aesthetically pleasing photograph, it sort of symbolizes that. It's a depiction of the birth of Baladev. And that's a beautiful one. Yes, so this photograph actually in the center of the village is this ancient tree. So this is a ancient tree which is in the center of the square, and this tree sits on a slightly raised platform. And I always wanted to make a photograph because this is the holiest of trees in the village. And this is where they believe that Thakurdev lives in this tree. So this tree is a revered tree. And I always wanted to make a photograph, and it was a very cold and a very misty morning. And I was sitting on that platform on the side after having a walk through the village. And I suddenly noticed this boy, and he started to climb the tree. He was playing, he was just, having a little bit of fun. And the minute I saw that boy climb the tree, and, in that negative space, as both the legs and both the arms touched the tree, I knew, I got goosebumps. I knew I had the shot. So that's what makes this shot beautiful, that little boy climbing the tree. But what makes this shot special is, I have to tell you, that little lady, that little, you see a lady figure in the background. Her name is Fagni Bai. So as I was walking through the village, she was walking with me. As I saw this boy run onto the tree, I was wearing, of course, shoes and socks. I ran behind him. And I knew that this raised platform is a sacred platform because it's their temple. But I was so caught in the moment of getting that photograph and, that boy climbing the tree, I forgot to take off my shoes because there was no time. So I was like, for about half an hour, I was around the boy. I was trying to make the perfect photograph. I wanted him to be just that high. I wanted all four of his limbs to touch the tree. I took the photograph. I felt very pleased with myself. I walked down the platform, and this lady is very patiently waiting for me to finish. And as I walked down, and then she took me to a house, we had a cup of tea. And over tea, she tells me that, don't wear your shoes and climb on the platform because that's a sacred place. And I felt like such an idiot. I felt like an idiot because she should have told me earlier. She should have said something. But that is the hospitality and the generous folk that they are. She said, no, I knew you were working. I know you were busy. I know you were making a photograph. I know you meant no harm. And I didn't want to disturb you because I was enjoying watching you make the photograph.
I mean, that kind of hospitality and rootedness you cannot find. Indeed, indeed. And that's really what we are trying to capture in this book. And I hope the book design is as simple, pure, and represents these people in some way. And the photography, of course. Thank you. I recall this when you first narrated this the other day at the exhibition, book exhibition, and I was really touched to listen to it. But now that you said, I noticed also one more thing that, of course, you said that it was a misty, foggy morning, and that's what we see in Cold. the background. Yes. But when we see here in front, it's quite clear. So that gives a kind of a contrast. And this little boy, he's almost levitating. He's hanging, and he's going up. So that's a Yeah. beautiful mixture, Yeah. Yeah. between clarity and something that's not so clear and the boy climbing. Thank you. I would like to now come to an end of this discussion, but there are a few things that I would like to highlight. And then if you have comments, I invite all of you or any one of you. What I really noticed that in this project, in this work, we see that it's really a teamwork, and you all have different skills. You all have different inspirations, but they somehow, like a river, they come together. And we all know the difficulties of working together, especially when you are from different places, different languages. Christian is also part of this project. So the sheer fact that the book is so beautifully written and presented today, and you are doing an exhibition, speaks for this teamwork. So many congratulations for that. When I was speaking with Mayank the other day at the exhibition, I could also see the happiness, the joy in his voice and his being. Having come to France, having found this possibility, this opportunity to talk to communicate, to present to French people from a different culture. So Christian is really bridging. He is bridging the gap between the people. He's uh, he's giving us this opportunity, and I think that's very important, and that's what we also try to do at Le Forum Français. But this is really a creative cultural way to do that. So again, congratulations for that. Now, in case you have any last thought, last word, concluding word, all of you or any one of you, I invite you. Est-ce que je peux dire donc un petit mot maintenant? Oui, bien sûr. On a l'habitude à DUPATTA d'inviter pratiquement chaque année des peintres indiens. Avec Padmaja, on fait la sélection. Quelquefois, c'est un peu difficile. Il faut que les gens puissent s'adapter, puissent y trouver plaisir, puissent aussi trouver un intérêt à venir en France. Et là, je voudrais parler un petit peu de Mayank. Je voudrais parler de Mayank pour dire que, au départ, ce qui m'a beaucoup plu dans sa démarche, c'est l'hommage qu'il veut rendre à son père. Il y a pas mal d'artistes dits Pardhan Gond aujourd'hui. Rares sont ceux qui ont autant de talent que Mayank. Mais surtout, la plupart des peintres ont un très fort ego. Et c'est pas ce que j'ai trouvé chez Mayank. Quelqu'un qui véritablement vit pleinement l'hommage à son père. Donc c'est la première chose qui m'a séduite chez lui. La deuxième, c'est son amour du village et la raison pour laquelle il a choisi des terres, des ocres, des minéraux venant de son village pour construire des couleurs sur plusieurs années et aboutir au résultat d'aujourd'hui. Enfin, troisième chose, toujours concernant Mayank, mais aussi les autres partenaires de ce projet, je les ai accompagnés quelques jours dans le village natal de Mayank et de Djangar. Et j'ai pu observer l'image, le respect de toute la population du village à l'égard de Mayank. C'est un respect pour toute une famille, pour tout un art, pour toute une façon d'exprimer leur gratitude par rapport à ce village. Donc vraiment, je les remercie parce que pour moi, au début, c'était une sorte de micro-projet et c'est devenu quelque chose de véritablement passionnant.
Je vais rajouter un dernier truc, après je me tairai. Il y a quelques jours, quand on s'est retrouvé à Lyon avec Komal, elle m'a dit quelle est la photo que tu préfères? J'ai hésité un peu, je dirais, j'ai même un peu fait semblant d'hésiter, et je lui dis c'est celle du petit garçon qui grimpe entre les deux troncs d'arbres. Mais je ne lui ai pas dit pourquoi. Et en fait, ma raison est la suivante. C'est qu'immédiatement, j'ai pensé que c'était un crabe qui montait entre deux troncs. Et le crabe, pour ceux qui connaissent les légendes, les mythes chez les Pardhan Gond, c'est essentiel dans l'histoire et l'imaginaire des Gonds. Donc, merci. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès, Komal, mais merci d'avoir fait ça, parce que pour moi, c'est vraiment une sublimation de tout le travail que vous avez fait collectivement. Je rajouterai rien de plus pour Padmaja. Elle sait que c'est grâce à elle qu'on arrive à faire tout ça en France. Merci encore, Padmaja. Well, merci beaucoup, Christian. I really wish that all of you knew French, because there were I understood. lot of beautiful and beautiful thoughts and very pertinent thoughts, appreciation that Christian just said about Mayank, about Komal and Padmaja. But never mind, this interview, I will try also to have subtitles, and we will also make a transcript in different languages. So this will be accessible. Uh, a special thanks to all of you, unless you others have a word. Do you have something to say, or we conclude? I Begin. would just like to say that, I mean, we have, tried to document all that is happening as of now in Patangad, because we have taken, everything in Patangad. We have done the whole exercise of research only in Patangad. And frankly, globalization is never going to stop. It is, going to happen. Um, but our endeavor is just to see what is happening presently, and try and compare it to what was in the past. So, I mean, that is, is going to be, we cannot change what is going to be, but all we can do is try and not restore it, also to try and document it for perpetuity. Indeed, indeed. Yeah, and again, for documentation, I appreciate your efforts to publish this book in English, but also in French. So again, the audience is wider. Uh, I would like to thank all of you for this session, for this conversation. Also, because you gave me a chance to talk in French, in English, in Hindi, and that's languages are really important for me. I believe that they are really meant to connect all of us, and they are important. But what is more important is the human value, the human connections. So with these words, thank you all of you. I wish you a nice stay in Paris, the end of your exhibition. I wish you many more visits to Paris, to France, and let's hope that this project will be read and appreciated by many more people. Thank you. Thank you. Thank you for Namaskar. having Thank us. you. Merci Thank you. beaucoup. Merci.